Okay, so today we are going to start Sushruta Tantra, the first chapter that is known as Opodrobik Adhyay. The Uttara Tantra, here Sushrut mentioned the best of Sushruta Samhita in these chapters. That's why it is known as the Uttara Tantra. By the name, it suggests Uttam Tantra means Uttara Tantra. The Uttam means better, or the best amongst the whole Sushruta Samhita. So it is known as Uttara Tantra. Let's know what are the contents of it and how much it's gonna affect us in terms of chapters and dedications that we need to put on through it. तो पहले देख लेते हैं कि इधर 66 चैप्टर्स है टोटल. तो उनमें से अगर हम इसे ऐसे डिवाइड करें कि पहले 1 to 26 शालक्य के लिए आता है. शालक्य का फर्स्ट 1 to 19 चैप्टर नेत्र रोग को डेडिकेटेड है. उसमें से द 19th चैप्टर स्पेसिफिकली इज फॉर द क्रियाकल्प एंड द अदर 18 चैप्टर इज मेनली ड्यू टू द नेत्र रोग्स एंड द प्रतिषेध ऑफ नेत्र रोग्स. 20 to 21 chapters are for the Karna Rog. 21 chapters is for the Karna Rog Pratished. The 20 chapter is for Karna Rog. Similarly, the 22nd chapter we got the Nasha Rog. We got the Pratishay as a separate chapter. Then we got the Nasha Rog Pratished Adhyay. Then we got the Shiro Rog Adhyay for 25-26. And also same kind of theory has been followed here. The 25th chapter is for the Shiro Rog and 26th chapter वो हमको मिलता है कि शिरो रोग प्रतिषेध होता है. तो हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया. तो उसके बाद अगला जो 12 चैप्टर्स है 27 to 38 ये कौमार वृत्त के लिए स्पेसिफाइड है. कौमार वृत्त में स्पेसिफिकली जो सुश्रुत ने ग्रह के बारे में बताया है तो मेनली उसका डिस्क्रिप्शन इधर मिलता है हम लोगों को. फिर आ जाते हैं बाकी 21 चैप्टर जो है 39 to 59 that is for Kaya Chikitsa. It starts with Jor Chikitsa. 62nd chapter is for Bhut Vidya. The first chapter of them is Amanush Pratished, Aposhmar and then followed by Unman. There are 3 chapters all total. That's different than Charok. That's something new we get to see in Sushruta Samhita. And the last 4 chapters, that is 63rd to 66th chapter, that is known as Tantra Bhushan Adhyay. We usually call it as R S T D. Many classes, many coaching areas has been mentioned the same, the RSTD. You may also find it very beneficial for you to remember it this way. समटाइम्स ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है कि स्वस्थ वृत्त नाम का जो चैप्टर है वो कहाँ मिलता है. तो वो सुश्रुत के उत्तर तंत्र में मिलता है. सिमिलरली एक और चीज़ यहाँ पर क्या आता है कि रोग निदान विकृत विज्ञान ये कहाँ आता है. तो ये अष्टांग में आता है. तो आपको जानना ज़रूरी है. अच्छा, तंत्र युक्ति के बारे में बात कर लेते हैं. तंत्र युक्ति के लिए इन्होंने एक अलग सा चैप्टर दिया हुआ है जो कि चरक में नहीं है. चरक में हमें तंत्र युक्ति विमान 8 में देखने के लिए मिल जाता है. तो इधर सुश्रुत का 32 तंत्र युक्ति हैज बीन मेंशन्ड. चरक का जो 36 मेंशन्ड है दिस इज नॉट तंत्र युक्ति, दिस इज मेनली वाद मार्ग. समटाइम वी कॉल इट एज तंत्र युक्ति बट दैट इज नॉट ट्रू. एंड देन अगेन वी गेट 36 in Ashtanga Sangraha, and for Bhattar Harichandra we get 40, and in Bhaprakash we get 42. That's how the total 66 chapter is ended.